Hello, my dear children. I welcome you all to my YouTube channel Science with Shekhar sir. So, we have already discussed in the previous two videos. In the first video, I have discussed with you about the structure of human eye. Now, today I am going to discuss with you all about few important, we can say, the natural phenomena which are there in our colorful world. So, as you can see on the screen, the dolphins. There is one dolphin, but it appears that two dolphins are there, right? So there are some phenomena which are responsible for this. That is total internal reflection. So dear students, I am going to explain you about total internal reflection. So in this aquarium you can see the ray of light अगर हम release करेंगे, that means if I will keep a source of light. Here I have kept a torch. You can see the torch is there. So when it will release light, what will happen? We know that there will be change in medium. Okay, water से air में जाएगा, obviously आप लोगों के दिमाग में यही आएगा कि सर water से air में enter करेगा. Yes, it will. But what will happen if I will keep on changing the angle of incidence? Then at what point? At one point it will behave like only reflection. No refraction is there. You will be surprised कि sir what do you mean by this? कि जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्लेक्शन होती है. बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेटा यही है कि इन दिस एट अ पर्टिकुलर एंगल, अगर हम उस एंगल से इंसिडेंस एंगल को बढ़ा करके स्ट्राइक करवाते हैं तो रे ऑफ लाइट चेंज ऑफ मीडियम करने की बजाय वापस उसी मीडियम में आ जाती है. दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन. So these are the normals which we have drawn. So I have used 5 different rays from the source of light, right? In the first ray, we know that this is normal. So normal में क्या होगा कि ray of light will pass straight. कोई deviation नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, straight होगा. ये हमने refraction में पढ़ा था. That is a one case when there is no refraction, right? This is the one. Second, obviously refraction will be there. Second ray में यहाँ पे हमारे पास refraction नजर आ रही है, right? And somewhat part is coming back, right? Partial reflection भी हो रही है उसमें, strike करके वापस आ रही है. So this is known as partial reflection. Now let it this angle is 30 degree. If this angle is 30 degree and suppose this angle comes to be 50 degree. Now if I am increasing this angle of incidence, this I was talking about this angle of incidence, I am increasing this. Now 30 to 35. What will happen? Again the ray will show refraction as well as partial reflection. तो एंगल इंक्रीज हो गया 70 डिग्री, राइट. अगेन आई एम इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री. नाउ व्हाट विल हैपन? As you can see, dear children, there is no partial reflection we are able to see. In spite of this, the ray is moving like this here at this point. As you can see, right, this point. The ray is moving along the interface. Interface means the surface which is separating the two mediums. इसके ऊपर एयर है और ये सरफेस की लास्ट लेयर है, वी कैन से टॉपेस्ट लेयर है ऊपर वाली. नाउ इफ आई विल इंक्रीज द एंगल, if I will increase the angle beyond this, right, beyond this, what will happen? Let's see. When I will increase the angle 42 more, now this angle at which the ray of light, in spite of change of medium taking place, in spite of this, it's moving along the separation of the two mediums, right? That angle is known as the critical angle. Now if the angle of incidence will be more than critical angle, then what will happen? Then the total internal reflection will take place. Let's see how.
Here you can see 45 degree. Now what you can see, this is called total internal reflection. Earlier the arrows were not so bold. Now the bold arrow represent that at this place the total internal reflection is taking place, right? In spite of change of medium, full light वापिस आ रही है. इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं. आपने देखा होगा कि ऑप्टिकल फाइबर्स के जो लैंप है जिसमें व्हाइट कलर के फाइबर्स यूज किए जाते हैं. बॉटम पे अगर हम लाइट ग्लो करते हैं तो पूरे फाइबर्स इन स्पाइट ऑफ ऑल आर हैविंग व्हाइट कलर, बट इन स्पाइट ऑफ दिस दे विल अपीयर of that particular color, right? So this is known as total internal reflection, where the angle is greater than 90 degree, that is angle of reflection. So it will come in the same medium. So now you will better understand by looking at this picture. This is experiment showing total internal reflection. अगर इस एंगल को पर्टिकुलर एंगल पे लेके आए, दिस एंगल वाज, इससे पहले एक एंगल क्रिटिकल एंगल होगा. नाउ इन स्पाइट ऑफ चेंज ऑफ मीडियम द रे इज कमिंग बैक इन द सेम मीडियम. This is total internal reflection. You will better understand by looking at this picture in this on your screen. Here you can see it's complete desert here. तो डेजर्ट्स के अंदर आप लोगों को एक मिरेज कंसेप्ट हम यूज करते हैं, मिरेज जो हमें देखने को मिलती है. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज मिरेज on the basis of total internal reflection. We know that the soil is very hot. तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, राइट, तो जो गर्म चीज होती है वो हमें पता है वो हल्की रहती है. तो नीचे वाला जो मीडियम है वो रेरा रहेगा. जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो डेंसर मीडियम बनते जाएंगे. नाउ व्हेन द रे ऑफ लाइट फ्रॉम सन फॉल्स ऑन द डेंसर मीडियम, then it is coming from denser to rarer. Now when it will come from denser to rarer, we know that it will bend away from the normal, right, away from the normal. Again now this another medium, upper one is denser. Here what I mean, you can see this is denser, right, and this is rarer, obviously, right. ये वाला ऊपर वाला ज्यादा डेंसर है, नीचे वाला थोड़ा कम है, इससे नीचे वाला और कम है. Now when the ray of light will move again it will move away from the normal, then again away from the normal. So finally when the ray of light will reach that person sitting on the camel from the top of the tree, he will be able to looking the tree in this point, right. In spite of looking like this, तो दूर से जब वो ट्री को देखेगा तो उसको इस तरीके से नजर आएगा. दिस इज mirage and it happens in deserts only, at high temperature in summers. So inverted image will be seen. That is all due to mirage. This also you have seen in summers. We have observed when we are moving going on somewhere on the roads. So हमें roads पे लगता है कि पानी गिरा हुआ है, but actually this is not water. This is actually the reflection of the blue sky on the ground due to mirage. Inverted image, blue sky ऊपर है लेकिन उसकी inverted image नीचे बनती है due to the mirage. Here you can see, right? Now you will be much clearer. This is what I was talking about. On highways के ऊपर हमें summer season में ये सीन जरूर देखने को मिलता है कि हमें अगर महसूस होता है कि somewhere water is spread on the ground. So mirage to occur, there has to be total internal reflection. Two conditions are required to be filled. One is light should travel from denser medium to rarer medium, and secondly, light should hit at an angle greater than critical angle. अगर critical angle से angle greater होगा, then only total internal reflection is possible. Otherwise, no possibility of this. Right? After this, we are having dispersion of light. We know that when white light is passes through prism, this is Newton disk which we have seen in the junior classes. When all the colors will mix, they will form white color. So when the white light split into 7 colors, different 7 colors, you can see here, red on the top, violet at the bottom. This is अब रीजन है कि व्हाट इज द कॉज, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस डिस्पर्शन. तो ऐसा क्या है कि व्हाइट कलर में से सारे कलर्स जो है वो सेपरेट हो गए.
कैसे हो गए? बिकॉज ऑल द कलर्स डेविएट एट डिफरेंट एंगल्स, तो एंगल ऑफ डेविएशन सब में अलग अलग होता है। ये जो स्पेक्ट्रम बना है हमारे पास, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, राइट? तो ये फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन। नाउ दिस बैंड ऑफ 7 कलर इज नोन एज स्पेक्ट्रम. The question is which color is deviating least and which is deviating most. You can see change in speed of light with wavelength. रे एक्चुअल में स्ट्रेट जा रही थी, सबसे कम डेविएशन किसमें हुई? रेड कलर में, और उसकी वेलोसिटी जो स्पीड होती है रेड कलर की सबसे ज्यादा होती है। इसी वजह से कुछ नेचुरल फिनोमिनास भी हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं। एंड वायलेट कलर इज डेविएटिंग मैक्सिमम, सो इसकी जो स्पीड है वो मिनिमम है। दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। एंगल ऑफ डेविएशन किसका ज्यादा है और एंगल ऑफ डेविएशन किसका कम है, स्पीड किसकी ज्यादा है, स्पीड किसकी कम है, राइट? Another is when recombination of light. When you will keep one prism, white light हमें पता है कि 7 colors में split हो जाएगी, red और violet I have shown you, right? But if I will keep an inverted prism on the other side and I will allow these two or the 7 colors to fall on the prism again, then it will again come back to the same color, that is white. This is known as recombination of white light. This is the only reason due to which there is no dispersion in the glass slab. Because अगर ग्लास स्लैब को भी आप ध्यान से देखो तो ग्लास स्लैब में भी हमारे पास दो पार्ट है, एक ये टॉप पोर्शन है, राइट, दिस वन, एंड वन इज दिस। तो टू पोर्शंस हो गए। दिस इज हमारी जो लाइन है सेपरेट कर रही है इनको। तो जब कंबाइन करते हैं प्रिजम्स को तो वो भी एक स्लैब बन जाते हैं, जिस वजह से हमारे पास वो जो ग्लास स्लैब है वो डिस्पर्शन शो नहीं करेगी, इसी वजह से। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेशन, राइट? ग्लास को हम इसी तरीके से मानते हैं कि इन्वर्टेड प्रिज्म को हमने कंबाइन किया। दैट इज अबाउट रिकॉम्बिनेशन। So this you might have seen dispersion, right? Formation of rainbow after the rain, 7 colors, right? But the question is why these 7 colors again? The rainbow formation that always occurs after the rain. So after rain, we know that rain droplets will be there in the atmosphere. So that when the sunlight will fall on these raindrops, then they will behave like prisms. So very important diagram. When the rays from the sun will fall on this drop, it will act like a prism. So what will happen? There are few phenomena will take place. Obviously, refraction and dispersion, right? And one more, that is total internal reflection will also take place. So it will form the rainbow, which we are able to see, right? So this is the natural phenomena of rainbow formation. I hope you have understood the video, the topics which I have explained you. Keep on watching for the next video. Thank you so much, dear students.